Hello students, how are you? Hope you all are fit and fine at your home. Dear students, we know that due to corona pandemic, the whole country has been under lockdown. The country is struggling with schools, teachers and lack of education. Most of schools are giving online classes, so we will also take the advantage of the same and continue our study so that we can cover our syllabus, and it will also help us to maintain the flow of study. So now we will start a lesson that is weather and climate. So today's chapter will be weather and climate. Before starting the lesson chapter weather and climate, we first must know what is weather. To simplify this, we can say that weather is its atmospheric condition. Weather is the atmospheric conditions. It may be hot, cold or windy, and it is temporary. On the other hand, climate is the kind of weather that a place has over many years. That is permanent. It remains for a long time. So, let's start our lesson. Yesterday was hot and sunny. Yesterday, कल का दिन कैसा था? हॉट था, बहुत गर्मी हो रहा था, तो सनी था. टुडे इज स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल. आज का दिन जैसे हम लोगों को वी फील वेरी अनकंफर्टेबल, वी आर नॉट कंफर्टेबल, सो इट बिकम्स जिसको बोलते हैं चिपका चिपका, स्टिकी लगता था. सो टुमारो इट मे रेन, बट वी कैनॉट से अबाउट टुमारो. कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते. सो इट मे रेन और इट मे बी अगेन a sunny day. So we say such things when we talk about the weather. When we will talk about the weather, जब हम weather के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ certainty नहीं दे पाते, श्योर नहीं हो पाते कि कल का weather कैसा होगा, कल बारिश होगा या फिर धूप होगा. इसके बारे में हम लोग कुछ श्योरिटी नहीं दे पाते. So the weather at a given place and time is its atmospheric condition. So it depends upon the atmospheric condition. Like hot, it may be hot, it may be cold, or it may be windy. Some other words we use to describe weather are sunny, cloudy, sticky, rainy, and snowy. In other words, we can describe the weather as it may be a sunny day, a cloudy day, a sticky day, rainy day, or it may be a snowy day. So, the weather of a place can change quickly. It changes quickly. मॉर्निंग में अगर धूप होता है तो दोपहर में हम लोगों को इमीडिएटली बारिश हो जाता है. दोपहर में वेदर ठीक रहता है तो रात को बारिश हो जाता है. सो इट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ नॉट फिक्स, इट चेंजेस विदिन ए फ्यू डेज और इवन ऑन द सेम डे. आज भी चेंज हो सकता है, कल भी चेंज हो सकता है, तो इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है. दिस इज नॉट परमानेंट. सो व्हाट डज द वेदर डिपेंड ऑन? इन दिस वेदर, ये जो वेदर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है. सो देर आर मेनी थिंग्स ऑन विच द वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंड. देर आर मेनी पॉइंट्स वी कैन डिस्कस, विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, that what are the points on which the weather of a place depends. So first one is your temperature, second is wind, third is rain, and the last one is your humidity. These are the few points that we will discuss on which the weather depends. So let's discuss the first point, that is temperature. The temperature tells us how hot or cold the weather or the air is. ये जो टेम्परेचर है ये बताता है कि हमारा जो एयर है, जो विंड है, ये कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है. When it is hot, we say the temperature is high. जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है तो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो we feel very hot. When it cold, we say that the temperature is low. जब टेम्परेचर लो रह जाता है तो हम कोल्ड फील करते हैं, ठंड लगता है.
So the temperature at a place mainly depends on the amount of sunlight received. So this weather depends upon the sunlight. When the sun rays are very harsh, then it becomes hot, and when the sun rays becomes very low or slow, it becomes mild climate, or when it rains, it becomes a cold climate or cold weather. So it is higher during the day than at night. दिन में ये वेदर जो रहता है हायर रहता है, गर्मी ज़्यादा रहता है as compared to the night. It is also higher in summer than in winter. Similarly, the weather remains hot during the summer season rather than winter season. We use a thermometer to measure the temperature. टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए ये जो टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमीटर. यू मस्ट हैव सीन दिस. आप लोग भी कभी कभी आप लोगों को बुखार होता है, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो आपके घर में आपके पेरेंट्स टेम्परेचर से आपका बुखार फीवर लाते हैं ना. सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट by which we can measure the temperature. Second point is your wind. So the wind is moving air. जो air हम लोग देख रहे हैं हमेशा आता जाता करता है, but it is not visible to us. It is invisible. We can feel it. This moving air is called wind. Why does air move? ये air जो होता है, जो wind होता है, क्यों move करता है? When it is hot at a place, the air over it is hot. जब एक जगह गर्म हो जाता है तो उसका एयर भी, जो विंड है इसका, वो भी गर्म हो जाता है. As hot air is lighter than cold air, it moves upward. अब जो जब गर्म एयर जब गर्म हो जाता है, it becomes lighter than the cold airs. So ये जब लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो वो क्या होता है, ऊपर उठता है जल्दी. So cold air from colder places rushes into fill the space left by the rising air. और जब hot air ऊपर उठ जाता है, हल्का हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसी टाइम क्या होता है ना, cold air उसका जगह fill कर देता है, मीन्स वो जगह वो ऑक्यूपाई कर लेता है. So this rushing air is wind, and this filling of air or this movement of air is called wind. It blows gently. When the wind blows gently, it is called a breeze. जब wind slowly, gently move करता है, then it is called a breeze. इसको हम लोग breeze बोलते हैं. Similarly, a strong wind is called a gale. जब wind strong हो जाता है तो ये gale, तूफान जैसे होता है, उसे रूप ले लेता है. बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. उसी के साथ जब वेदर भी बैड हो जाता है तो इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. स्टॉर्म्स आर डेंजरस. इट्स बिकम वेरी डेंजरस. आप लोग देखे होंगे जब सुना जो आया था हमारा अम्फान हुआ था, कितना ज़ोर से तूफान आया था और सुनामी आया था, और इसको जो बोलते हैं बहुत सारे ऐसे हमारा स्टॉर्म्स हुए जो हमारा बहुत डिस्ट्रॉय किया है, हमारा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत सारे चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है. सो दे कैन अप्रूट द ट्रीज. वो बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता है. एंड डिस्ट्रॉय हाउसेज, हॉट किल्ड हॉल हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. लोग भी बहुत मर जाते हैं पेड़ के नीचे आके, हाउस के नीचे रह के, या फिर स्टॉर्म भी बहुत सारे चीज़ उड़ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड द रेन एंड वाटर साइकिल. यू मे नो दैट वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. व्हेन हम लोग जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक भाप निकलता है, वाटर वेपर, हीटिंग होने के बाद. एंड वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग. अगेन हम लोग उसको कूल कर देते हैं तो इट बिकम्स वाटर. The sun heat changes water from river. The sun's heat changes water from the river, lakes, seas, and oceans to water vapor. The sun, जो हमारा सूरज क्या करता है ना, that is
रिवर से, लेक से, सी से, ओशन से पानी सोख लेता है वाटर वेपर के थ्रू. द वाटर वेपर राइजेस इनटू द स्काई विथ वार्म एयर. ऊपर वार्म एयर बन के वो ऊपर भाप जैसे उड़ जाता है. As it rises higher, the warm air cools down. जब वो बहुत ऊपर चला जाता है वो warm air becomes cool down. The water vapor in it changes back to tiny drops of water which float in air. और वो क्या करता है ना, बादल जो हम लोग क्लाउड्स बोलते हैं, बादल, वो क्या होता है क्लाउड्स की तरह ऊपर में फ्लोट करता है. Clouds are made up of a large number of these floating drops of water. एक साथ जब बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स एक जगह में हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है, और these are the floating drops of water. Several water drops may join together to form a bigger drops. बहुत सारा वाटर ड्रॉप्स जब एक जगह जॉइन हो जाता है तो ये बिगर वाटर ड्रॉप्स बना देता है. These are too heavy to float. और ये क्या होता है ना, जब साइज उसका बड़ा हो जाता है तो और वो फ्लोट नहीं कर पाता है. अल्टीमेटली दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज रेन. ओके, देन उसके बाद क्या होता है, अगर एक चीज़ भारी चीज़ ऊपर में रहेगा ज़्यादा टाइम तक वो रेन नहीं रह पाएगा. धीरे धीरे वो क्या होता है ना, नीचे गिर जाता है रेन के जरिए, मतलब रेन बन के. सम ऑफ द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सिप्स इनटू द ग्राउंड. और धीरे धीरे क्या होता है ना, एक जो रेन जब होता है तो वो बारिश, मतलब रेन और बारिश क्या होता है ना, जब नीचे वो गिरता है रेन के आकार में, तो ग्राउंड क्या करता है, मतलब जमीन क्या करता है, कुछ वाटर अंदर तक सोख लेता है. द रेस्ट ऑफ इट्स गोज बैक टू द लेक, रिवर, सीज एंड ओशन. बाकी सब लेक में कुछ चला जाता है, कुछ रिवर में चला जाता है, सीज में, ओशंस में, ये सब डिवाइड होकर चला जाता है. So water keeps moving from the earth's surface to the atmosphere and back. This is called water cycle. Now you can see the picture as given in your book, the water cycle. First you see the number 1 arrow, that is water changes to water vapor and rises upward. You will first see that in the down we are having this sea or ocean, you can say, and when the sun rays comes, it changes the water into vapor and rises upward. As we can see the arrow mark of 1, it rises up, and when it rises up it forms cloud. That is number 2, it forms cloud. And these clouds, when come in contact with the cold wind, again it comes in the form of rain. That is number 3. As you can see the arrow number 3, that it shows rain. It forms rain, and the rain again comes down to the ocean or earth or onto the ground. So when it comes down to the ground, some water seeps into the ground and the rest flows to the different water bodies. To clarify this or to simplify this, I will show you another diagram, then how the water cycle is formed. You can see the second diagram where you will see the water in the surface, on the surface, and when the water sun rays comes, or due to the heat, the water becomes water vapor. Water goes up in the form of water vapors, and it forms cloud. And when these clouds come in contact with the rain, it again come back to the surface as rainwater. And some rainwater seeps into the ground, and the rest water goes into the different water bodies. So I think it will clear to you that how the water cycle occurs. Now we will start with snow and hail. As air rises higher, it gets cooler. जब एयर ऊपर उठता है ज़्यादा तो it becomes very cool. High up in the sky, water droplets freeze. जितना ऊपर हम लोग जाते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो क्या होता है ना, फ्रीज होता है, जम जाता है, आइस जैसे जम जाता है, हार्ड हो जाता है. So the clouds here are made of ice crystals, and this forms like the crystals of ice. When these crystals join and become heavy,
ये जब हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है, देन फॉल डाउन एज स्नोफ्लेक्स, जमीन में आके गिरता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स. यूजुअली स्नोफ्लेक्स मेल्ट इनटू रेनड्रॉप्स as they fall through the warmer air near the ground. Usually क्या होता है ना, these snowflakes melt into rain drops, मेल्ट हो जाता है. आइस हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं जब आइस को हम लोग बाहर रख जाते हैं तो क्या होता है ना, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये हॉट एयर के कांटेक्ट, बाहर जब निकलता है फ्रीज से तो ये हॉट एयर के कांटेक्ट में आके मेल्ट होता है. सिमिलरली स्नोफ्लेक्स जब ग्राउंड में गिरता है तो वो क्या होता है ना, हॉट एयर का कांटेक्ट में आके रेन ड्रॉप मेल्ट होके रेन ड्रॉप के हिसाब से ये अनदर फॉर्म बन जाता है उसका, रेन ड्रॉप्स. इट मेल्ट्स and forms drops of rain. But if a place is very cold, the flakes do not melt and we have snow instead of rain. But अगर वो जगह ठंड है, the place is very cold, then the flakes do not melt. वहाँ पे air cool है, then these flakes do not melt and it becomes snow. It will not be rain. It will remain as the snow. Sometimes raindrops can carried upward by rising air to very cold regions. They are freeze. A number of frozen drops join to form balls of ice. We can call these balls as balls of ice hailstones. These balls of frozen raindrops fall as hails. Sometimes you have seen that कभी-कभी जब बारिश हो जाता है उसके साथ कुछ आइस के टुकड़े भी गिरते हैं बारिश के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं hailstones. You must have seen these hailstones. So the second is your fog, dew and frost. A fog is a cloud that forms close to the ground. ये ज़्यादातर ग्राउंड में दिखाई देता है. On the cold nights the ground gets very cold. जब ठंड के दिन होता है तो the ground becomes very cold. The water vapor in the air near the ground changes into drop of water, forming a cloud. We cannot see clearly in a fog. Fog इतना मैंने धुआं जैसा दिखाई देता है कि वो हमें एक दूसरे का फेस दिखना भी पॉसिबल नहीं होता है, क्लियर कुछ दिखाई नहीं देता है. इस टाइम में जब फॉग ज़्यादा रहता है, कभी कभी ज़्यादातर एक्सीडेंट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज वी कैनॉट सी द थिंग्स क्लियरली. यू कैन सी द पिक्चर हाउ दिस बिकम्स द एरिया looks like a smoky area and just like the smoke it spreads, the fog spreads everywhere, so it is not possible for us to see the things clearly during this fog. So the fog disappears when the air becomes warmer. जब मॉर्निंग में ज़्यादातर दिखाई देता है, जब सन आता है या फिर दोपहर का टाइम हो जाता है तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे डिसअपियर होता है, मेल्ट हो जाता है उसमें. You must have seen water droplets forming on a glass of cold water. The air in contact with the glass cooler down. Its water vapor changes to water droplets on the glass. Suppose एक ग्लास हम लेंगे, उसमें कुछ आइस डालेंगे, जैसे कि मैं बताया पहले, आइस डाल के उसको कुछ देर तक बाहर रख देंगे तो उसके क्या होता है ना, उसके बाहर में कुछ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखाई देता है उस ग्लास के बाहर. So in this similar way, on cold nights, drops of water are formed on cold leaves, petals, grass, bark bunches, and so on. These drops of water are called dew. इसको हम लोग बोलते हैं dew. When it is very cold, the dew may freeze into ice. जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो ये dew क्या होता है, फिर से आइस बन जाता है. इस frozen dew को हम लोग बोलते हैं frost. Next is your humidity. So this is also a point on which the weather depends. So humidity is the amount of water vapor in the air. It is the amount of water vapor that is necessary in the air. We say it is humid when there is a lot of water vapor in the air. जब water में when we say it is humid when there is a lot of water vapor in the air में जब वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, we say that it becomes humid or we feel the humidity. The air can hold only a fixed amount of water vapor. एयर का कैपेसिटी जितना है
to contain the water vapor amount of water vapor, it can hold that much. If it already has a lot of water vapor, it cannot take up anymore. पहले से अगर इसमें वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा है तो इट कैनॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर. सो ऑन अ ह्यूमिड डे आवर स्वेट डज नॉट इवापोरेट. सो पहले जो वाटर वेपर का अमाउंट रह जाता है तो और वो वाटर वेपर लेने की उसका पास कैपेसिटी नहीं रहता है. सो स्वेटिंग उस टाइम हमें ज़्यादा स्वेटिंग होता है और ये जो स्वेटिंग होता है वो जल्दी से इवापोरेट नहीं हो पाता है. दैट्स वाई वी फील स्टिकी. हम लोग जिसको बोलते हैं चिपके चिपके लगता है एंड वी फील अनकम्फर्टेबल. कुछ पसीना नहीं निकलता है लेकिन हम लोग को गर्मी लगता है. वी फील वेरी अनईजी. वेट क्लॉथ्स आर ऑल्सो लॉन्गर ड्राई व्हेन इट इज ह्यूमिड. जब वेदर ह्यूमिड रहता है तो उस टाइम क्या होता है ना, जो वेट क्लॉथ से, जो गीला क्लॉथ से, वो सूखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. सो ऑल दिस वेयर अबाउट योर वेदर. What is weather? What are the in this chapter we first discuss about what is weather and what are the conditions on which the weather depends. And the conditions were, that is, first one is your temperature, second one is your wind, third rain, and fourth or last one was the humidity. Next we will discuss what is climate. As I have already discussed that climate is the kind of weather that a place has over many years and which is very permanent. So climate is the kind of weather a place has over a long period. बहुत long time तक रहता है ये climate. Unlike the weather, the climate of a place remains the same. Just like the weather, the climate of a place also remains same, but for many years. The climate of a place depends on many things. Just like the weather, the climate of a place also depends on many things. One of those is how far it is from the equator. Now look at the right side picture of your book. In this picture, you will see that the picture of Earth is given, which is divided by an imaginary line called equator. The dotted lines, white dotted lines, you can see in the picture, and one of these is most important thing is that the sun's rays, direct rays of the sun, is near the sun becomes very hot. The rays of the sun becomes very hot near the equator because it gets the direct rays of the sun. So the places becomes very hot, which is near the equator. So these places have a hot climate. As we move towards the poles, the sun rays become slanting. धीरे धीरे हम लोग जैसे ही सन इक्वेटर से दूर जाएंगे तो सन रेज बिकम्स स्लैंट और डायरेक्ट सन रेज नहीं मिलेगा एंड द क्लाइमेट गेट्स कोल्डर. आफ्टर दैट यू विल सी दैट द क्लाइमेट बिकम्स वेरी कोल्ड. द पोल्स हैव ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड आर कवर्ड विथ आइस. Near the poles, the climate becomes very cold and sometimes it may have lots of ice. The climate of a place also depends on how high it is. The second point is the height of the place. How high it is. As you know, the air gets colder as we move up. जितने up ऊपर जाएंगे हम लोग, air becomes cold. So places in hills and mountains have a cooler climate than places in plains. As compared to the plains, high mountains or near hills or mountains, the climate becomes very cool. You must have known that sometimes during summer season तुम लोग जाते हो पेरेंट्स के साथ कुल्लू मनाली जो हिल स्टेशन है वहाँ घूमने के लिए जाते हो. क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कूल रहता है. थोड़ा नहीं, कूल है वहाँ का क्लाइमेट एज कंपेयर टू आवर स्टेट्स. आवर कंट्री इज क्लोजर टू द इक्वेटर दैन टू द पोल्स. हमारा कंट्री इक्वेटर के पास है. सो वी हैव ए वार्म क्लाइमेट. मैं अभी बोली कि जो प्लेसेस इक्वेटर के पास रहता है the places becomes very hot and have a warm climate. Similarly, India is having a warm type of climate.
but those places in our country that are in high mountains have a cold climate. But ऐसे भी कुछ जगह है हमारा कंट्री में जो हाई माउंटेन के पास है, हाई हिल्स के पास है, so they get a very cold climate. We also have a long rainy season. Similarly, we also have a very long rainy season. So all these are your chapter climate and weather, or you can say weather and climate. Now we can summarize this lesson that what we have discussed. Let's summarize. Firstly, we learned that the weather of a place depends on many things such as temperature, wind, rain and humidity. The temperature of a place also tells us how hot or cold it is. Temperature is also measured with an instrument called thermometer. Then moving air is called wind. A gentle wind is a breeze. A strong wind is a gale. Then water vapor changes to water droplets high in the air. These droplets form clouds. When the droplets become heavy, they fall as rain. Very high clouds are made of ice crystals. In cold conditions, these come down as snow. The amount of water vapor present in the air is called humidity. The weather can change quickly, but the climate does not change for many years. Places near the equator have a hot climate. The climate gets colder as we go towards the poles. So all these are your summary of this chapter. Now we can discuss the meanings of some difficult words. These are some new words for you, and let's discuss. First one is your weather. The weather at a given place and time is its atmospheric condition, like hot, cold or windy. Storm, bad weather with strong winds and rain. Water cycle, the movement of water from the earth's surface to the atmosphere and back again. Fog, a cloud formed close to the ground. Dew, droplets of water formed on cold leaves, petals, grass, etc. Frost, frozen dew. Climate, the kind of weather that a place has over many years. So all these are your new words, and you have to learn the meanings of these words, as well as you have to learn the highlighted words, spellings that is given in this chapter. If you like this video, then subscribe to our channel, and link to the exercise question answers of this chapter is given in the description below. Thank you.